के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी दोनों के इंटरेस्ट में है। ये भी एक बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी। और अगर ये कमिटमेंट भी आ जाए कि इन दो एग्रीमेंट्स के साथ साथ बातचीत को आगे जारी रखने पे भी इत्तेफाक हुआ है, तो मेरे ख्याल है कि पहले सेशन के ये बहुत अच्छे आउटकम होंगे इससे मिलते जो सामने आ जाए। और इसके अलावा ज़ाहिर है ईरान की तरफ से तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ईरान तो ये चाह रहा है कि उसका जोहरी प्रोग्राम भी जारी रहे। ईरान ये भी चाह रहा है कि जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर वो खत्म की जाए। ईरान जो पिछले कुछ बयान के अंदर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जो उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। ज़ाहिर है उस अजाले के वजह से ईरान एक तो अपने हुर्मुज़ में जो है वो टोल रिसीव करने की बात कर रहा है, दूसरा ईरान जो है वो सैंक्शंस के खात्मे की बात कर रहा है। सैंक्शंस के बारे से क्या लग रहा है आपको? ईरान पे जो पाबंदियां हैं उस वाले से भी कुछ में नरमी हो सकती है अमेरिका की जानिब से? मेरा ख्याल है कि अगर उस तरफ से ईरान की तरफ से भी कुछ डिलीवरेबल्स हों तो सैंक्शंस को तो ग्रेजुअली यूएस ईज करने की पोजीशन में है। और जो ईरान में हालात हैं, जो ईरान में इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इन्फ्लेशन की वजह से जो लोगों के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक इंसान दोस्ती के ज़ुमरे में आएगा कि किसी न किसी तरह से कुछ सैंक्शंस टू स्टार्ट विद ईज हों और ग्रेजुअली उन पे बिल्ड हो रेसिप्रोसिटी के असूल के तहत। लेकिन दोनों की जो डिमांड्स हैं 10 और 15 वो बहुत मैक्सिमलिस्ट हैं और बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत पेचीदा डिमांड। तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्ड बाय वर्ड वो दोनों तरफ की डिमांड्स को पूरी होने वाली है। हाँ, उन डिमांड्स की कुछ उनको डाइल्यूट करके उनके कोई फॉर्मुलेशन चेंज करके और हर डिमांड के साथ दूसरी साइड पे कुछ कंडीशन अटैच करके आगे कोई रास्ता निकलेगा और इसी तरह से इस तरह की पेचीदा नेगोशिएशंस में होता है। और एक और जो अहम मामला है जज साहब वो है ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से। ईरान ने पहले भी उस पर लचक दिखाई जब बराक ओबामा के दौर में मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ही तोड़ा था एक तरफा तौर पर। और उसके अलावा जो बाद में जो रिसेंटली भी इस जंग से पहले भी ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका के जो फेल हुए और उसके बाद फिर बल्कि वो मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने अटैक कर दिया था, उसमें भी ईरान फ्लेक्सिबल था अपने जोहरी प्रोग्राम को लेकर। तो क्या समझते हैं कि जोहरी प्रोग्राम की वजह से अब भी ईरान मजीद लचक दिखा सकता है या कुछ राय तो ये भी आ रही है कि ईरान शायद इस पे आगे बढ़ेगा रिजिड होकर कि ईरान अब उसे अपनी डिफेंस के लिए डिटरेंस के लिए बहुत ही जरूरी समझता है। जो 2 साल के अंदर जो है वो 2 अटैक्स ईरान पे हो चुके हैं। देखिए पूरी दुनिया में और कोई नेशन स्टेट ऐसी नहीं है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू कर रही हो और उन्होंने IAEA के साथ इस हद तक जाके कोऑपरेट किया हो जो पिछले तकरीबन 15 साल में ईरान ने किया है। ऐसी विजिबिलिटी IAEA को कभी नहीं दी गई और उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं दी गई किसी भी नेशन स्टेट से जिस तरह ईरान ने अपनी न्यूक्लियर जो उनकी तनसीबात हैं उसमें IAEA की कहीं कहीं प्रेजेंस 24/7 भी रखी है। और इस दफा जंग से एक दिन पहले जो ओमान की तरफ से कुछ खबरें आई थी, अब मुझे ये इल्म नहीं कि वो लफ्ज़ हकीकत पे मबनी थी या नहीं, तो मेरा ख्याल है वहां जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान ने दिखा दी थी उससे आगे अभी ईरान क्या और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। अब थोड़ी सी पोजीशन एक चेंज हुई है और वो चेंज ये है कि परसेप्शन डोमेन में ईरान का अपर हैंड है इस वॉर के अंदर। तो क्या वो पोजीशन जो 27 फरवरी तक जिस तक वो रजामंद हो चुके थे वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अभी मुश्किल है कहना। ज्यादा चांस यही है कि पहले ही दिन वो उस पोजीशन पे वापस नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो पोजीशन उनके पास एक बार्गेनिंग चिप है, उसमें इन रिटर्न उनको क्या क्या ऑफर किया जाता है वो सबको कंसिडर करके ही या वो 27 फरवरी वाली पोजीशन पे जाएंगे या उसके कहीं नजदीक जाएंगे। ज़ाहिर मिसाइल प्रोग्राम के वाले से तो ईरान कतन किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। जितना ज़्यादा इस मिसाइल प्रोग्राम ने ईरान को सपोर्ट किया है इस जंग के दौरान भी, जो एक अहम मामला है वो है ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। उस पर भी ईरान ने यह कहा था कि उनके ऊपर भी अटैक्स रोके जाएं, लेकिन लबनान के अंदर हमले कम हुए हैं, लेकिन हमले अब भी जब हम बात कर रहे हैं वो हमले जारी हैं इजराइल की जानिब से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि वो हमले कम कर दें, रोकने का नहीं बल्कि कम करने का कहा है। क्या समझते हैं कि वहाँ जो साउथ लबनान के अंदर जो
इजराइल एक बफर कायम करके अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहा है, तब तक इजराइल नहीं रुकेगा और उसे रोकना मुश्किल होगा, या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असर्ट करके रुकवा भी सकते हैं? जिस तरह का बफर और जिस तरह की एनहांस सिक्योरिटी पैरामीटर इजराइल परसू कर रहा है, वो बहुत सालों से परसू कर रहे हैं। तो इतने सालों से चीज नहीं हो सकी, वो इन चंद दिनों में तो आगे होने वाली नहीं है। वो अपने क्लेम्स जो थे उनके कि उन्होंने हिजबुल्लाह को, हमास को और जो कुछ तंजीमें सीरिया में थी उन सबको खत्म कर दिया है, वो ऐसा तो हो नहीं सका। तो उनका हल भी पॉलिटिकली ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो शायद इस प्रोसेस में अभी सेंटर स्टेज नहीं लेगा मेरे ख्याल में। दूसरा, मेरी राय में यूएस इस पोजीशन में है कि वो रोक सके इजराइल को लेबनान में और गाजा में कार्रवाइयां करने तक, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। और शायद आप देखें कि जब टेबल पे बैठती हैं दोनों साइड्स, तो कुछ जो अब उन्होंने कहा है कि कमी आएगी यूएस के इजराइल के ऑपरेशंस में, शायद वो खत्म होते हुए नजर आए हमें। और इन टॉक्स का इस्लामाबाद में होना कितनी बड़ी कामयाबी के वाले से जमानत हो सकती है? कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है कि जब पाकिस्तान बहुत ही अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी एंजॉय कर रहा है और अमेरिका के साथ भी, जो मौजूदा अमेरिकी क़यादत है उसके साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस सारे मुज़ाकराती अमल के अंदर? जी, अब देखें ना, ये तो इंटरनेशनली हर जगह पे बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एसेट था, इस रोल को जो वो प्ले कर रहे हैं हम, वो है ट्रस्ट दोनों साइड से, कम्युनिकेशन दोनों साइड पे, मल्टीपल लेवल्स ऑफ लीडरशिप पे। तो वो एसेट्स तो सबके सामने है। और ये जो अब तक कोशिश हुई है वो कितनी खुशाइंद है, उसमें प्रॉमिस क्या है आने वाले दिनों के लिए, उसने दुनिया को क्या फायदा पहुंचाया है, इसमें पाकिस्तान को तो मेरा नहीं ख्याल को कुछ क्लेम करने की जरूरत है। पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। जो एक दो ममालिक ऐसे हैं जो इस पे कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं उन्होंने ली, तो उसकी रीजंस हैं, वो हम सबको पता है, चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है या इजराइल है। सही है, यानी मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में तो पाकिस्तान का बड़ा किरदार था, मुज़ाकरात को कामयाब बनवाने में जो है वो उसमें पाकिस्तान का रोल जो है उसकी मैं चाहता हूँ उस पर भी आप ज़रा कमेंट कर लें। जो पाकिस्तान का एक है ईरान के हवाले से भी जो ताल्लुकात हैं अच्छे और अमेरिका के साथ भी हैं, वो कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं इनकी कामयाबी के हवाले से? देखिए, जो ज़ाहिर पाकिस्तान अब एक फैसिलिटेटर नहीं, अब एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, ज़ाहिर है। अच्छा, there's a very fine line between the two, I think. Exactly. चाहे आप फैसिलिटेटर कह लें या मीडिएटर कह लें, पाकिस्तान ने गुड फेथ में ऑनेस्टी के साथ 40 दिन एक ब्रिज का रोल प्ले किया है, कम्युनिकेशंस का, सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं, और बहुत सारे ममालिक और ईरान के दरमियान भी, और बहुत सारे ममालिक और यूएस के दरमियान भी। और पाकिस्तान की जो ऑनेस्टी है, जो गुड फेथ है, जो कमिटमेंट है फॉर कंप्रिहेंसिव पीस, वो भी, उसकी विजिबिलिटी भी चारों तरफ है। और ये असल में हम सतही तौर पर चीजों को देख के ये रियलाइज नहीं कर सकते कि इन 41 डेज की डिप्लोमेसी में एक क्वेश्चन पाकिस्तान पे नहीं उठा। ये बहुत मुश्किल काम है। मिसस्टेप्स होते हैं जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर रहे हो, जब इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप मीडिएट कर रहे हो, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, डिस्टॉर्शंस होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस दफा भी और जून वाली कॉन्फ्लिक्ट में भी, आई वुड से बिल्कुल जो एक रोल मॉडल कह सकते हैं उस तरह का किरदार है। अब जब टेबल पे आएंगे तो दोनों तरफ में जो विल होगी, दोनों तरफ में जो विजडम होगी टू शो फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस, उसका जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट पे है। पाकिस्तान ने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर दी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में बिठा के उनको बात करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी, अगर पोजीशंस बहुत एक्सट्रीम पे चली जाएं तो उनको रिकंसाइल करने में भी वो रोल प्ले करेंगे, दे विल बी ऑन द टेबल। लेकिन अगर आप कहें कि पाकिस्तान ने ही हर आउटकम निकालना है और पाकिस्तान ने ही हर आउटकम की गारंटी देनी है, तो ऐसा शायद नहीं हो। सही है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सूरत हाल पर इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से बात जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी। आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं। ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता। खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुताल्लिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज़ पर तशरीफ लाएं। सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो। मतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। Wow, very impressive trip. Service Tires is a game changer. Service Tires, Pakistan's global tire brand. أنه يعني بعيد عن الواقع فعليا عما يحصل في جنوب لبنان، خصوصا وأنه الغارات والتصعيد بشكل أساسي يتركز منذ اليوم الدامي الذي حصل في بيروت أول من أمس، والغارات التركيز والتصعيد يحصل في جنوب لبنان، وآخره ما ذكرته عن الاستهداف الذي حصل في استهدف سراي النبطية وأدى إلى مقتل 13 عسكريا من جهاز أمن الدولة في استهداف للعسكريين اللبنانيين ولمرفق عام. وبالتالي اليوم الأنظار موجهة بعد هذا الكلام بطبيعة الحال إلى يوم الثلاثاء وحتى إلى هذه الليلة إلى الاجتماع التمهيدي المرتقب اليوم بخصوص المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وماذا والذي سيحصل في واشنطن وما سيرجع عنه، والاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء. نعم، واضح ريمي. وأنتقل إلى هبة مصالحة. هبة، فيما يتعلق بلبنان والإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها تجاه الجنوب وتجاه لبنان بشكل عام، هل من تطورات لو سمحتي؟ يعني على صعيد التطورات، الجيش الإسرائيلي عمليا موجود في أكبر بلدة في جنوب لبنان في بنت جبيل، وكذلك موجود في بلدات جنوب لبنان. ما زالت الإطلاقات كذلك من قبل حزب الله مستمرة. أيضا هناك وتيرة منخفضة من الاستهدافات الإسرائيلية بعد الطلب الأمريكي مباشرة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلبه بتخفيف وتيرة الاستهدافات تحديدا عقب الاستهداف العنيف والواسع أول من أمس، والذي سقط ضحاياها عدد كبير من القتلى والجرحى. المستوى السياسي والأمني في جلسة الكابينت منعقدة منذ 3 ساعات حتى هذه اللحظة في إطار مشاورات لمناقشة لبنان وكذلك إيران. في إطار لبنان نتحدث عن مطالبة إسرائيلية للجانب الأمريكي بأخذ فترة زمنية أو نافذة زمنية من 2 إلى 5 أيام لتنفيذ هجمات واسعة قبيل المفاوضات التي ستكون الأسبوع المقبل، والتي تحدث عنها عمليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها ستكون في محورين اثنين: نزع سلاح حزب الله بالكامل من لبنان وكذلك سلام مستدام مع لبنان، علما بأن التقديرات الإسرائيلية لا ترجح نجاح هذه المفاوضات، ولكن هذا جاء بضغط أمريكي، وتحديدا بأن بعض الأوساط المراقبة تقول بأن بنيامين نتنياهو أدرك متأخرا بأن ورقة لبنان هي لاعبا أيضا حاسما في المفاوضات الجارية في إسلامباد، ولذلك سارع بالإعلان بأنه وجه الوفد المفاوض للذهاب في إطار المفاوضات يوم الثلاثاء القادم مع الدولة اللبنانية. بالمجمل هناك تصريحات متناقضة من قبل إسرائيل، سواء تلك التي يصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باللغة الإنجليزية والتي يتحدث عن مفاوضات، وتلك التي يصدرها باللغة العبرية والتي يقول فيها بأنها مفاوضات تحت النار، علما بأن في المصادر الأمنية يتحدثون بأن هناك طلب بتخفيض الاستهدافات داخل لبنان. هل يمكن أن نتوقع أي تغيير يوم الغد، لأنه ستبدأ مفاوضات إسلام أباد؟
على الصعيد الإسرائيلي هي عمليا بدأت يعني التغييرات لناحية الهجمات في لبنان، انخفضت بوتيرة كبيرة نسبة للأيام الماضية، وهذا ما يتحدث عنه عمليا المستوى العسكري بأنه تلقى هذه التعليمات بتخفيض هذه الوتيرة. لا نعلم إذا ما كان هناك انسحابات، يعني الجيش الإسرائيلي يقول بأنه ما زال موجود في بلدات جنوب لبنان وحتى ما زال موجودا في بنت الجبيل، وهو اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بإصابات وصفت بأنها عنيفة حرجة عفوا، وكذلك إصابة متوسطة نتيجة المواجهات أيضا وإطلاق المسيرات باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. لا يتوقع حتى هذه اللحظة انسحاب الجيش الإسرائيلي، ولكن استمرار للهجمات ربما كما كان في وقت سابق قبل دخول حزب الله في إطار هذه الحرب من خلال إطلاق 6 صواريخ لمساندة إيران. ربما تعود إسرائيل لذات الوتيرة في إطار عمليات الاغتيال، هجمات محدودة من سلاح الجو الإسرائيلي. هبة مصالحة، شكرا جزيلا لك. ريمي درباس، شكرا جزيلا لك. كشف الجيش الإسرائيلي في بيانات جديدة بالأرقام عن حجم وكثافة الضربات الجوية خلال عملياته في إيران، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية داخل الأراضي الإيرانية، واستهدف سلاح الجو نحو 4000 هدف، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 18,000 قنبلة ضد أهداف داخل إيران. بدوره أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن إسرائيل حاليا في حالة وقف إطلاق نار على إيران، ولكن يمكن استئناف القتال هناك في أي لحظة وبقوة كبيرة وفق قوله. الجيش الإسرائيلي في حالة حرب ولسنا في حالة وقف إطلاق. और इसमें आपको पता है कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली हम थोड़ा सा टच नहीं कर रहे क्योंकि उसको सीक्रेट रखा जा रहा है या डिस्क्रीट रखा जा रहा है। लेकिन मैं ज़रा इस प्रोसेस के बारे में समझना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आदिल साहब ने कहा कि पूरा मामला बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं, किस नौयत के मुज़ाकरात होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर इस हवाले से कोई आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें। और दूसरा, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या साइडलाइंस पर मज़ीद मुज़ाकरात भी हो सकते हैं? शहजाद, देखिए आपको पता है कि यूएई ने जो पैसे पार किए थे पाकिस्तान में, उन्होंने विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी कहा कि जी ये उनकी रकम है, और जो यूएई है उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी पाकिस्तान के साथ। अब उन्होंने समझा कि उनको उन पैसों की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान ने वो पैसे रिटर्न किए। और इस सारे मामले का आपको पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी एक बड़ा ताल्लुक़ है। अब चूँकि एक माशी मामला भी है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की, और यकीनी तौर पे ये इश्यूज़ भी वहाँ पर डिस्कस हुए होंगे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सऊदी अरब और यूएई आपस में इनका जो रिलेशन है वो भी सौर हो चुका हुआ है, वो भी इतना आइडियल नहीं रहा। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पाकिस्तान को अगेन अपना मफाद भी देखना है और आगे भी बढ़ना है। जो यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के यहाँ पर आने से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पर जो मुज़ाकरात होंगे उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क है वो पाकिस्तान ने पहले से कंप्लीट कर लिया हुआ है, और जितने दिन का वक्फा था जब से ये अनाउंसमेंट हुआ, सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ,
उस दौरान भी पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से करीबी राब्ते में रहा है और उन्होंने एक कॉमन ग्राउंड्स भी मेरी इत्तलात के मुताबिक तैयार हुई हैं और 4-5 ऐसे नुकात भी हैं जिनके ऊपर दोनों जो फ्रीकैन है उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई ये की जा रही है कि ये जब दोनों मिलेंगे तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ ये ख्वाहिश तो कम से कम ज़रूर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निकला जाए। उसके तरीक़ाकार के ऊपर बात हो सकती है। अलबत्ता ये तो एक इंटरनल मैकेनिज्म है, इसमें कुछ एक्सटर्नल इशूज़ भी हैं जो इन मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये इनका एक एंड जो है वो मुस्बत एंड हो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद और डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर दिल खोलकर शौकत खानम कराची के लिए अपने एहतियात दीजिए, क्योंकि इसकी बर वक्त तकमील मुमकिन बना के किसी का बड़ा ख्वाब पूरा करेंगे आप। शौकत खानम कराची। कभी बातें बढ़ती हैं मगर मंजिल नहीं मिलती, कभी वादे होते हैं मगर यकीन नहीं मिलता। जहां अंदाज खास हो वहां इंतखाब भी बदलना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा रिश्ता जो दिल से जुड़ा हो और उम्र भर साथ निभाने वाला हो, तो इंतखाब कीजिए दिल का रिश्ता VIP, जहां ना अंदाजे होते हैं ना वक्ती फैसले और होते हैं सिर्फ बावकार, संजीदा और तस्दीक शुदा रिश्ते। Israel with cascading results all across the Middle East, with Lebanon being at the heart of this at the moment. You've made the argument this is a trap for Iran, posting if Iran doesn't respond to Israel's attack on Hezbollah, it'll lose its remaining influence in Lebanon. If it responds, it will have broken this 2-week ceasefire, the terms of this 2-week ceasefire. So we're 24 hours away from what are the scheduled talks. Let's see if they happen in Islamabad. But do you think that this fragile ceasefire, and we have to call it fragile, like it or not, we have seen significant attacks by Israel on Beirut on Wednesday. We have seen attacks by Hezbollah this morning on Israeli assets. So do you think this ceasefire is going to hold? And by the way, Israel says Lebanon isn't involved in the ceasefire, be that as it may. Or is it just a pause in what could become an even hotter conflict at this point? I mean, as I have been saying, Iran is really on the back foot. Its model of influence in the region through proxies is degrading. It has lost a lot of its military capacity. It had been protesting against negotiations, and now it has agreed to them, which can only be read as a sign of weakness. And even there, as you quoted, I have been saying that this is a trap for Iran, because in a way, damned if it does, damned if it doesn't. So no matter how you turn the situation or how you look at it, Iran is really being cornered here. However, when it comes to the ceasefire holding, I am not very hopeful. I think what's more likely is that we are witnessing a period of strategic refinement on part of the US, on part of Israel, and on part of Iran. And I expect that we're going to see further escalation. And that's simply because the demands of the US and what Iran is willing to do are very far apart. And Israel has not yet achieved its goals, which is to neutralize the threat posed by Iran in the region. And I don't think this is going to happen through 2 weeks of ceasefire and negotiations. I think we're still some way away from seeing the end of this war. Talks between the U.S. and Iran are set to begin on Saturday in Pakistan, with a shaky ceasefire between the two countries barely holding together. Oil shipments through the Strait of Hormuz are still disrupted. President Trump is lashing out at Iran for doing a poor job of reopening it.
Israeli strikes against Hezbollah targets in Lebanon are also threatening the ceasefire. The Israelis have agreed to peace talks with Lebanon beginning next week as well. Now, security is tight in Islamabad as ahead of tomorrow's negotiations. Vice President J.D. Vance will be heading up this U.S. contingent with Special Envoy Steve Witkoff and the president's son-in-law, Jared Kushner. The war in Iran has rocked the global economy as well, so the stakes are high. Here's the German chancellor, who says they've reestablished communication with the Iranians ahead of tomorrow's talks. We are doing so in coordination with the United States and our European partners. Our goal through this process is also to make our own contribution to the success of the negotiations ahead. This is also the purpose of the phone call I will be having today with Pakistani Prime Minister Sharif. Joining me now for more, Admiral James Stavridis, CNN senior military analyst and former NATO Supreme Allied Commander. Good morning. I want to talk to you because I'm hearing sort of mixed messages about what's coming through the Strait. You've got countries, I think the Philippines is in a national emergency in terms of energy. Thailand, Japan, South Korea, they're all trying to broker deals. But here is what the Deputy Foreign Minister of Iran has said so far. The Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there. So you've sailed through many times. What does he mean? What do you hear in that statement? It's all nonsense. He is attempting to exert sovereign control over the Strait of Hormuz. That's illegal under international law. The strait is narrow. It connects two bodies of international waters, and under every angle of international and maritime law, therefore, the strait enjoys the right of transit passage, technical term, meaning any nation can go through it any time, conducting normal operations, including military ships. So for him to say, oh, it's open, but we've got control and you have to check in with us. And he didn't even mention the tolls that he has been charging the 2 or 3 ships that are allowed through. So his statement is baseless. Can you talk about this in the context of the upcoming talks brokered by Pakistan? What's a win for the U.S.? Do they even have the leverage right now to get, as you reminded us, unfettered control of the strait, which is international waters? The short answer is we'll see how the talks go. I, for one, am simply watching to see the physical appearance of both U.S. and interlocutors from Iran showing up in Islamabad, getting safely into a conference room and having talks. At the start, Audi, there'll be indirect kind of passing messages back and forth. If they get in the room together, that's a pretty good sign that things are moving in at least let's have a talk direction. To answer the question, what looks like a win? Job one, open the strait. And open it fully for all ships passing through. That may require some pre-work by various navies to ensure there are no mines in it, sweep it for mines, and then put guided missile ships going through first. Because I don't think there are many merchant captains who are going to put their hand in the air and say, sure, I'll lead the charge through the Strait of Hormuz. So I think that's job one. And then job two is to secure some kind of agreement about the enriched uranium sitting in the middle of Iran. Those are the two high points of the unfinished business of this war. This morning, there are reports of blasts in Lebanon and elsewhere, reports that traffic is barely moving in the Strait of Hormuz, if at all. These were the key conditions of the 2-week so-called ceasefire. And if these ज़रखेज़ी आसान ज़राई कर्जा इस्लामिक फाइनेंसिंग की सहूलत के साथ। दुनिया खबर की दुनिया।
बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस। सर्विस टायर्स के फ्लेक्सिबल कारकस से मिले स्मूथ राइड बिना शॉक्स। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। सर्विस टायर्स, पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। अनोखा शहर है ये कराची, 24 घंटे धड़कता है, बेचैन रहता है कल के इंतजार में, फिर भी ठहराव है, एक मजेदार तजाद, हर पल मोहतात, लेकिन गैरों पे। These talks are even being close to being met. The stage is set here. Pakistan considers this a matter of national honor that they're able to host these talks. They're ready, as you mentioned, tight security in the center of Islamabad here. Iranian delegation expected today. Steve Witkoff, Jared Kushner expected tomorrow. We understand at the moment. Look, I think it's important to say all these timings are variable. There is so much more that we don't know than we actually know. We know that the United States has had a 15-point plan. We know that Iran has had a 10-point plan. We know that the Iranians have said that 3 points of that plan were already disrupted, if you will. They're saying they're absolutely entitled to have uranium enrichment. They're absolutely entitled not to have drones over their skies, which they had claimed a day or so ago. And of course, that core issue over Lebanon, Iran and Pakistan's Prime Minister here have said that they believe that that was a core understanding, that the Lebanon ceasefire would be part of the broader US-Israel-Iran ceasefire, which is holding more or less at the moment. So that is a contentious point. We've heard from Pakistan's president, we've heard from Pakistan's foreign minister, we've heard from their sort of top interlocutor diplomat, the Speaker of Parliament, Mohammed Ghalibaf, saying that basically Iran's finger remains on the trigger, that they want this issue of Lebanon and a ceasefire there worked into this deal, settled before they get to the table here. And the expectation at the moment is that the parties are coming together, that these are diplomatic issues that can be wrangled out to bring the parties together. And if they can be brought together, and that's the aspiration here in Pakistan for sure, is that some diplomatic progress can be made. That said, the last time the US and Iran came together, it wasn't face-to-face. They were fraught. Of course, it fell into a war after that. And so the tensions between and the lack of trust between the US and Iran is huge at the moment. And the principal test of that trust from the US side, the sort of confidence building, if you will, that Iran was going to produce to get into these talks and give them a hope of a positive outcome would, of course, be allowing tankers through the Strait of Hormuz. Right, and the traffic there does not appear to be moving in any substantial way. Nick Robertson for us in Islamabad. We're monitoring developments there. Thank you so much. Yeah. Kate? Let's get the view from the White House on this very issue right now. CNN's Elena Trine is standing by there. The vice president is expected to be departing sometime soon for what are still these planned talks. What are you hearing from there? Yeah, look, I think a lot of people in the administration are, of course, a bit wary of how these talks are going to go. But I've heard, particularly yesterday, after some of the back and forth, of course, there's a lot of concern yesterday morning and Wednesday night about whether or not this fragile ceasefire would actually break down before they had a meeting in person to try and deal with this. But over the last, 12 to 24 hours or so, there's been a little bit more optimism. And I know the president himself is hoping that once they are in person in Pakistan, that hopefully they can broach some of the really large daylight between these two different plans, as Nick laid out, the 10-point plan from Iran, the 15-point plan from the U.S. I am told they're expecting the meeting on Saturday with the vice president, Steve Witkoff, Jared Kushner, to be the first of likely several intense negotiations over that 2-week ceasefire. And of course, they could ultimately extend the ceasefire further if they believe progress is being made. But one thing I just want to point out about Vance himself quickly is that, one,
I've been told that his presence here is really meant to lend a certain air of credence to these talks. He's, of course, the president's number two, has a lot of the president's full trust to negotiate on his behalf. But also one thing that's been interesting as well from some of my conversations around this is that they recognize Vance as someone that the Pakistanis, the mediators involved in this, but also the Iranians know as someone who is a former anti-interventionist person in foreign wars, that he was one of the few people who did not want the president to move forward with strikes, which could also give perhaps a sense of, giving Vance looking more reasonable perhaps in their eyes. We'll have to see how these negotiations go. But of course, a lot riding on them at a very, very precarious time for this ceasefire. This morning, we've got major new questions leading up to scheduled peace talks in Pakistan between the United States and Iran. Vice President J.D. Vance leading the U.S. delegation. You're looking at live pictures from Joint Base Andrews, where the vice president is scheduled to depart any minute. But there are these questions, big ones, like, is a ceasefire if there is still fighting? There are new strikes in Lebanon overnight. Of course, Israel says Lebanon was never part of the ceasefire deal with Iran. Iran says otherwise. Kuwait also says there were strikes there as well. Another question, is a ceasefire if the key concession from Iran has not been met? We're talking about the Strait of Hormuz. The president had insisted that Iran opened the strait, that was part of the ceasefire deal, but traffic there remains severely disrupted, barely a trickle, if at all. With us now is Senator Chris Coons, a Democrat from Delaware. He is on the Senate Foreign Relations Committee. Senator, good to see you this morning. What is your best case realistic scenario for these talks scheduled to begin tomorrow? Well, John, thanks for that question. Best case is one thing, realistic is another. From the beginning of this war of choice, this chaotic war, it's been unclear exactly what President Trump's goals are and exactly why the United States has spent more than $50 billion over more than 40 days. Americans are seeing the price at the pump over $4 a gallon everywhere in the country. We're going to see inflation go up. The costs at the grocery store will be impacted. Fertilizer will impact the growing season for farmers around the world. And as you just said, the Strait of Hormuz is not open. And if the goal was regime change, we have Ayatollah 2.0 in place, his son, more angry, more radical, more likely to be aggressive. Yes, we've sunk a lot of their official navy. No, we haven't weakened their ability to shut the Strait of Hormuz. Yes, we've blown up a lot of ballistic missiles. No, we haven't ended their ability to keep launching them every day. Iran clearly still has control of its country. It has control of drones and small fast boats and missiles that continue to strike and threaten American bases, American embassies, and our partners and allies throughout the region. So it is unclear to me what's been accomplished. Of course, I wish J.D. Vance success, and I hope that there will be a negotiation, but maybe it can achieve a real ceasefire first, and then hopefully an accounting for the highly enriched uranium that we still don't have transparency or accountability into, and an end to the closure of the Strait of Hormuz. The United States has stopped striking Iran, inside Iran, Israel as well. Other than that, do you think it can be called a ceasefire, a 2-week ceasefire? It really can't if the core thing that Iran is doing, squeezing off world commerce through the Strait of Hormuz, is still happening. And frankly, if bombing is continuing throughout the region. So it's not a ceasefire yet, although the reduction in active hostilities is a positive thing. Look, President Trump's despicable Easter morning tweet threatening to erase an entire civilization is something that Americans need to think deeply about and that Republicans in Congress need to speak out about. We've lost the moral high ground of being a country that fights for regime change, that delivers on its promises to try and help the suffering people of other nations, and instead, under President Trump's leadership, become a country that seems only focused on extracting oil from other countries, whether it's Venezuela or Iran. He's weakened our alliance with NATO, most of which is angry at him for his mistreatment and disrespect of them, and it has encouraged and emboldened Iran, Russia, and China. This week, President Trump needs to decide
whether to continue the sanctions relief that he's giving to both Russia and Iran that has dramatically increased how much they are profiting off this war. I hope and pray that he doesn't. What are your expectations for Vice President J.D. Vance? We're, again, waiting for him to depart Joint Base Andrews any second now. What are your expectations for him as a negotiator? Well, look, he has very limited foreign policy experience. I'm at least relieved that he is leading this, not a former real estate developer from Manhattan who has zero international experience, a buddy of President Trump's who's been leading much of the negotiations with Russia and Ukraine, with Israel and the Palestinians, represented mostly by Hamas and the Palestinian Authority. So the representatives of the Trump administration in the two other most critical wars, conflicts currently going on, have been people with real estate development experience. So my hope is that he will step up to this moment, that he'll be clear-eyed, and that he will narrow our goals rather than continuing to deliver to the American people a mess of conflicting and likely unachievable goals. How much influence does the United States have over Israel right now? If the United States struck this deal, if the president has been asking the Israeli prime minister to back off in Lebanon, and it's hard to tell that that's happening? Look, President Trump calling Netanyahu and saying you must reduce your campaign against Lebanon was a positive step, and the United States has significant leverage if President Trump would use it. Part of what anyone could have predicted about this war with Iran is that when President Trump said it was a war of regime change, that the Iranians would use every weapon and tool at their disposal, including making it a regional war, bringing in a dozen other countries that they have struck. And so, frankly, President Trump has a lot of work to do to reduce the efforts made by Prime Minister Netanyahu, who has also tried to regionalize this war. Well, security is tight in Islamabad as US Vice President J.D. Vance makes his way there to meet Iranian representatives face to face. It is 6 p.m. in Pakistan. It is 5 p.m. here in Abu Dhabi in the UAE. From our Middle East programming headquarters, I'm Becky Anderson. This is Connect the World. Stock market in New York opens about 30 minutes from now, 9:30 local time there. US futures flat amid Iranian uncertainties just after 9 in the morning there. So as I say, back there at the bottom of the hour. We begin with the countdown to the first talks between the US and Iran since the war began more than 40 days ago. The US Vice President, who is leading the American delegation, set off for Pakistan a short time ago. He'll be joined by US Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. Well, security tight ahead of Saturday's discussions in Islamabad. Iran has not officially announced the makeup of its delegation, but the key issues in these talks are clear. The situation in the Strait of Hormuz urgently needs to be resolved. President Trump accuses Iran of doing a poor job in allowing oil through and is warning Tehran against charging tolls. Add to that, new fears over the global energy supply after Saudi Arabia confirmed a recent attack on a crucial pipeline, and concerns over whether attacks in Lebanon could derail the peace process. After heavy Israeli bombardment this week, Hezbollah says it launched new attacks on Israeli soldiers and on an Israeli border town earlier today. Nick Robertson is in Islamabad ahead of these talks. Kevin Liptak has got perspective from the White House. To you first in Pakistan, Nick, where it is Friday evening. Is the Iranian delegation in town? And what can we expect from these talks at this point?
They're expected to be in town. U.S. delegation J.D. Vance expected early Saturday. That's what we have at the moment. You just heard from him there, laying out how he sees these talks going and the opportunities that exist. It's fair to say there is a lot of other diplomacy going on here. This is a big diplomatic lift for Pakistan. Officials here say they're honored to take this role. We know the Prime Minister of Pakistan has been meeting with the Saudi Finance Minister, and a lot of other diplomatic phone calls going on across the region. So this is a big lift. It is going to take more than the US and Iran coming into the same building in separate rooms, we would anticipate, as they were in the Oman-hosted talks before this war began. Trust offers obviously at a deficit, and we got a sense of that from the US Vice President speaking there. But in terms of what to expect here, it is hard to know, because although there is tight security, on top of that you have layered tight secrecy, if you will, and that's something you've witnessed, we've all witnessed across the region, that this is such a sensitive issue. No one wants to put a foot wrong, and at the core of it for the United States, getting the Straits of Hormuz opened, and for the Iranians, it appears the big ticket issue is tying in a ceasefire that would protect their proxy Hezbollah in Lebanon from Israeli bombardment. And they've said, and this perhaps hints at why we don't know who's in their delegation, that this is a sensitive issue. The President, the Foreign Minister, the Speaker of Parliament, Galibaf, who is expected to lead their delegation, have all said their finger is on the trigger, that there's a lot at stake, the US economy essentially at stake if Israel continues with that bombardment of Lebanon. But the details of what to expect here, I think that the sort of expectations are being kept relatively low, that whatever happens tomorrow. के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा, रेड जोन मुकम्मल सील, सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त, मौसम नकवी की वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनक़ाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। अमरीकी सदर भी ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। इजराइल लेबनान पर हमले कम कर रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से फोन पर गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू लेबनान पर हमले कम कर देंगे। ईरान आबनाए हरमुज से गुजरने वाले टैंकर से फीस ले रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो अब ये रोक दें। ऐसी सूरत हाल मुआहदे के खिलाफ और काबिल कबूल नहीं है। इस पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। अबनाए हरमुज से बहुत जल्द तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी, चाहे इसमें ईरान का ताउन शामिल हो या ना हो। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ने देंगे। दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें तो अमरीकी बहरी जहाज आबने हॉर्मज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ने वाशिंगटन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबने हॉर्मज़ खुली है। तकनीकी मसाइल की वजह से ईरानी अफवाज के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। आबने हॉर्मज़ से महफूज बहरी सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा, मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। लेबनान में जंगबंदी और ईरान के असासों की बहाली पर जोर। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, फ्रीकैन के दरमियान तय दो अहम मामलात पर अमल दरामद होना बाकी है। मुज़ाकरात से पहले ये दोनों मामलात हल होने चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर तख्त रवानची का कहना है कि ईरान सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान ऐसी जंगबंदी नहीं चाहता जो जारह को दोबारा हमले की इजाज़त दे। मुआहदे में जंग रोकने की ज़मानतें शामिल होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राब्ते, अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लबनान के वज़ीर-ए-आज़म की कॉल्स मौसूल हुई। ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मन चांसलर और इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन किया। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी मुआहिदा यकीनी बनाने में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद दी। अमन के लिए सिफारती रास्ते अख्तियार करने की पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत। रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और उसके एहतराम की अहमियत पर जोर दिया गया। इसाक डार को नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नीदरलैंड्स ने जंगबंदी में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की हिमायत का इजहार। फरीकैन का लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। पायदार अमन के लिए जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। जनूबी लेबनान में इसराइल के फिजाई हमले जारी। एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 16 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का एक हफ्ते में हिजबुल्लाह के 40 से ज़ायद अरकान को कत्ल करने का दावा। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि काबजीन के इनखला तक आखिरी सांस तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। दुश्मन को ज़मीनी सतह पर शिकस्त हुई। इसराइल जारहियत के बावजूद मिसाइल्स को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। इसराइल की लबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ये धोखाधड़ी और मुमकिना मुआहिदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इसराइली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमायनी बना देगा। ईरान अपने लबनानी बहन भाइयों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तुर्क सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तैयब अर्दवान का कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देरपा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की हिस्पानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्पेन की पॉलिसी को सराहा। अराक्ची ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर स्पेन का शुक्रिया अदा किया। कहा ईरानी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका जंगबंदी के बाद सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ हुई। अमरीका अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे ताकि लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ बंद हों। ईरान अमरीका जंगबंदी पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पसीराई। एफसोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। 8 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी राय आमा में 70% मस्बत रुझान देखा गया। सोशल मीडिया पर शुक्रिया पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत इस पेशरफ का अहम सबब है। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली की तारीफ मुमकिना आलमी जंग को रोकने की कोशिश करार दिया गया। पाकिस्तान आलमी सिफारती सतह पर एक अहम प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के मोतरफ। जंगबंदी की कोशिशों में हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत हासिल। गैलेप सर्वे के मुताबिक 93% अवाम ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत कर दी। 80% पाकिस्तानी जंगबंदी से अमन के लिए पुरुमीद। 82% अवाम जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से आगाह। 40% पाकिस्तानियों को अमरीका और ईरान में जबरदस्त डील की उम्मीद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर। अमीर कतर से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केयर स्टार्मर की कतर पर हमलों की मजम्मत। सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। कतर और बरतानिया ने अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी का इम्कान। हुकूमत ने फैसला कर लिया।
हुकूमती आला अहदेदार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा आज अवाम को तेल की कीमतों में कमी से मुतालिक खुशखबरी देंगे, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत कम करने के हवाले से प्लान तैयार कर लिया गया। डीजल की कीमतों में भी कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास समरी जाएगी, कीमतों में कमी का हतमी ऐलान रात को किया जाएगा। किफायत शहरी पॉलिसी सिंध भर में मार्केट्स के औकात कार महदूद कर दिए गए। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में दुकानें रात 9 बजे बंद होंगी। सिंध के दीगर शहरों में दुकानों की बंदिश के लिए रात 8 बजे का वक्त मुकर्रर। तंदूर, दूध, दही की दुकानों, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल। पेट्रोल पंप्स और अस्पताल भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1673 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी, जापान के निकी इंडेक्स में 2% इजाफा। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। चीन और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $99.16 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96.78 फी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.93% का इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 12.15% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। LPG का सिलेंडर 440 रुपए से जायद महंगा हुआ। टमाटर फी किलो 8 रुपए तक महंगे हुए। आलू, प्याज, दालें, चीनी, दूध, साबुन और घी के दाम भी बढ़ गए। पाकिस्तान की मईशत बहाली की राह पर गामजन। माली साल 2025 में मुआशी नमू में बेहतरी, सख्त मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान बारे मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 2026 में 3.5% तक रहने की पेशगोई। 2027 में मुआशी शरह नमू मजीद बेहतर होकर 4.5% तक बढ़ने की तवक्को। रिपोर्ट के मुताबिक सनदी शोबे की बहाली और सरमायाकारी में इजाफा मईशत को तकवीत देगा। मशरक़ वस्ता कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है। तवानाई और खाद की कीमतों में इजाफा मईशत पर दबाव डाल सकता है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का खतरा बरकरार है। ईरान और अमेरिका जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद करें। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर की सरबराह काया कालास का कहना है कि अफ्रीकन खत्ते में फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद कर दें। लेबनान में भी जंगबंदी होनी चाहिए। नेक नियति के साथ मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। अबनाए हरमूज में आज़ाद और महफूज जहाजरानी को यकीनी बनाना होगा। अमरीकी और इस्राएली बमबारी में तबाह काशरान में रेलवे पुल बहाल कर दिया गया। ईरान ने रेलवे पुल को 3 दिन के अंदर बहाल किया। पहली ट्रेन काशरान के तारीखी याहियाबाद पुल से गुजरी। रेलवे पुल को 7 अप्रैल को अमरीका और इस्राएल ने हमलों में निशाना बनाया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल सिफारती काविशों को खिराज तहसीन। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी आलमी अमन के लिए खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करते हुए अमन के क़याम में अहम हिस्सा डाला।
आलमी बिरादरी को चाहिए अमन के इस मौके से फायदा उठाए। नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात, वजीर आला पंजाब की भी मुलाकात में शिरकत। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। मार्का हक के बाद उभरने वाला पाकिस्तान दुनिया में अमन का मरकजी किरदार बना है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हमजा शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की जानिब से क़याम अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार की तहसीन। जंगबंदी मुस्तकिल अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। 2 हफ्तों की जंगबंदी मुमकिन बनाने में सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और खलीजी मुल्कों की क़यादत काबिल तहसीन है। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने पर अमरीका और ईरानी क़यादत के मशकूर हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के नतीजे में देरपा अमन कायम होगा। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 ईरानी नुकात अमरीकी सदर के सामने रखे। ईरान अमरीका जंगबंदी करवाने पर अवाम का इजहार तशक्कुर। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां। बहावलनगर में रैली के शिरका का पाक फौज और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। बहावलपुर, विहाड़ी, मंडी बहाउद्दीन में भी इजहार तशक्कुर रैलियां। ताजिरों, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर में मसीही बरादरी की यौम तशक्कुर के हवाले से रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जंगबंदी में किरदार अदा करने पर कौमी क़यादत को सराहा। देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए रिलीफ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के तहत शहरी और देही इलाकों में स्टाम्प पेपर ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% कर दी गई। इससे पहले शहरी इलाकों में 1% और देही इलाकों में 3% स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जा रही थी। सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन की हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। मुतासरा बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरान की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट उनके पास पहुंचेगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चों और खवातीन की वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस एकेडमी भी कायम की जाएगी। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बच्चियों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह का कहना है सेफ सिटी मंसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों की जान और माल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएंगे। मनसूबे से शहर की सिक्योरिटी, निगरानी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जदीद दौर का अहम तकाजा है। फेज 2 के तहत शहर में मजमूई तौर पर 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में एक बार फिर झगड़ा, अरकान गुत्थम गुत्था। नजमी आलम की तकरीर के दौरान पानी दो कराची को और हक दो कराची को के नारे। जालों ने जीए भुट्टो की सदाएं लगा दी। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अरकान में हाथापाई, मुक्के चल गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जमात इस्लामी की रविश को पीटीआई ने मुस्तरद किया। पीटीआई ने भी जमात इस्लामी के रवैये की मजम्मत की। ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। 12 साल इनके पास हुकूमत रही, मैं इनकी मुनाफकत को एक्सपोज करता हूँ। नजमी आलम इनके बारे में गुफ्तगू करते हैं तो बुरे हो जाते हैं।
बहरिया का शुमाली बहर अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तजारती बहरी जहाज MV गोल्ड ऑटम से मौसूल होने वाले हंगामी सिग्नल के बाद 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया की माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने तजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मावनत और अमले को तिब्बी इमदाद फ्राहम की। रेस्क्यू किए गए अमले को तिब्बी इमदाद के बाद अपने मुमालिक वापसी के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए तैयार और पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन, अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों, फौरी रद्द अमल और इंसान दोस्ती के जज्बे को सराहा। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की नमाज जनाजा DG खान में अदा कर दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की नमाज जनाजा में शिरकत, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सरदार जुल्फ़िकार अली खान के बेटों से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। कहा, सरदार जुल्फ़िकार अली खान की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही मोहम्मद खान भट्टी के हमरा मियाँ असलम इकबाल की रिहाइशगाह आमद। मियाँ असलम इकबाल की वालिदा की वफात पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत, बातें ख्वानी भी की। कहा, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। माँ जैसी हस्ती का साया सर से उठ जाना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारतीय सिख यात्रियों का पहला काफिला गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंच गया। 752 भारतीय सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंचे। गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचने पर सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल। जिले इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर की गई। रमेश सिंह का कहना है कि सिख यात्री जब चाहें पाकिस्तान आए, हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का हामी रहा। दुनिया में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा जा रहा है। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी, सैकड़ों मुसलमानों की शिरकत। मुसलमानों ने इसराइली मजालिम के खात्मे और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को 40 दिन बाद गुज़श्ता रोज इबादत गुजारों के लिए खोला था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत एतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेरे इल्तवा है। इसराइली हुकाम के मुताबिक मुकदमात जंग के बायस रोक दिए गए थे। अब जंगबंदी के बाद मामलात बहाल हो रहे हैं। नेतन्याहू पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्जामात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती मुआफ़ी के लिए हिमायत कर चुके हैं। HBL PSL 11 रावलपिंडीज को पहली जीत की तलाश। रावलपिंडीज की कोयटा ग्लैडिएटर्स के 183 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। रॉयल हीरोज 153 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साउद शकील 42 और हसन नवाज 39 रन बनाकर आउट हुए। बैन ने 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। और यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल मरहले की पहली लेग ऑस्टन विला ने बोलोग्ना को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। आज का मैच देखने वाला होगा। वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट। सोल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट वाइट, जिसके वाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स वाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट वाइट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद।
वीकली प्राइम से मिले 100 GB डेटा, लगातार टेलीनॉ मिनट्स और 600 अदर नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 600 रुपए में। तो अभी टेलीनॉ पर आओ, ऑफर लगाओ और डेटा की टेंशन को भूल जाओ। पहाड़ों में चपली कबाब। आलिया, पहाड़ दिल की सुनते हैं। मसूड़ों में दर्द है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। कोलगेट हर्बल मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। तो नाज़रीन, पाकिस्तान आलमी अमन का अलमबरदार अमरीका और ईरान हाथ मिलाने को तैयार। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए मेहमानों की आमद आज और कल मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान का वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील वड़ाइच, यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की तरफ हैं। आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त जिना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं और यहाँ एक दावत दी गई है, खास तौर पे जो ईरान और अमेरिका से आए हुए सहाफ़ी जो हैं इस आकर एक बड़े इवेंट को जो दुनिया में अमन कायम करने जा रहा है उसको खुद आकर विटनेस करें। इस वक्त इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मेहमान हैं उनकी रवानगी हो चुकी है और जो उनका इस्तकबाल के हवाले से वो सुबह के वक्त इस बात का इम्कान है कि जो दोनों ममालिक के जो डेलीगेशन हैं वो पहुंचेंगे। अगर दोनों ममालिक की जो साथी टीमें हैं वो पहले पहुंच चुकी हैं, उससे पहले जो सिक्योरिटी टीम्स हैं। सही अदील वड़ाइच, इससे पहले जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं उनका जायजा लिया और अब इंतजार किया जा रहा है कि कल ये स्टेज कल जब ये मेज जो है मुज़ाकरात का ये सजेगा। पाकिस्तान बड़ा इस हवाले से पुरुमीद है, अमेरिका इस हवाले से बहुत पुरुमीद है और जो ईरान है उसकी जानिब से बहुत इस हवाले से पॉजिटिव ईरानी क़यादत की जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। खास तौर पे जो जेडी वेंस हैं जब उनकी रवानगी हुई पाकिस्तान के लिए, अगरचे उन्हें मैं यही पूछना चाह रहा था अदील, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा क्योंकि शाम में जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उस वक्त जेडी वेंस ने वहां से फ्लाई किया यहाँ आने के लिए, तो कब तक एक्सपेक्टेड है वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद? देखें, उनको रास्ते में मुमकिन है of reopening it. Israeli strikes against Hezbollah targets in Lebanon are also threatening the ceasefire. The Israelis have agreed to peace talks with Lebanon beginning next week as well. Now, security is tight in Islamabad as ahead of tomorrow's negotiations. Vice President J.D. Vance will be heading up this U.S. contingent with Special Envoy Steve Witkoff and the president's son-in-law, Jared Kushner. The war in Iran has rocked the global economy as well, so the stakes are high. Here's the German chancellor, who says they've reestablished communication with the Iranians ahead of tomorrow's talks. We are doing so in coordination with the United States and our European partners. Our goal through this process is also to make our own contribution to the success of the negotiations ahead. This is also the purpose of the phone call I will be having today with Pakistani Prime Minister Sharif. Joining me now for more, Admiral James Stavridis, CNN senior military analyst and former NATO Supreme Allied Commander. Good morning. I want to talk to you because I'm hearing sort of mixed messages about what's coming through the Strait. You've got countries, I think, the Philippines is in a national emergency in terms of energy. Thailand, Japan, South Korea, they're all trying to broker deals. But here is what the Deputy Foreign Minister of Iran has said so far. The Strait of Hormuz is open.
Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there. So you've sailed through many times. What does he mean? What do you hear in that statement? It's all nonsense. He is attempting to exert sovereign control over the Strait of Hormuz. That's illegal under international law. The strait is narrow. It connects two bodies of international waters, and under every angle of international and maritime law, therefore, the strait enjoys the right of transit passage, technical term, meaning any nation can go through it any time, conducting normal operations, including military ships. So for him to say, oh, it's open, but we've got control and you have to check in with us. And he didn't even mention the tolls that he has been charging the 2 or 3 ships that are allowed through. So his statement is baseless. Can you talk about this in the context of the upcoming talks brokered by Pakistan? What's a win for the U.S.? Do they even have the leverage right now to get, as you reminded us, unfettered control of the कि ये जो कल का जो दिन है ये दुनिया के अमन का दिन जो है वो होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसके मजीद फॉलो अप मीटिंग्स जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं। अगरचे एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अब नाए हुर्मुज़ का मामला है जो न्यूक्लियराइजेशन, उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम मामलात अब इस्लामाबाद हैंडल करने जा रहा है और बखूबी इसको निभाया भी जाएगा और इसमें कामयाबी भी मिलेगी। अदील वड़ाइच हमें इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी हवाले से आपको मजीद भी खबरें देंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बातें खत्म हो सकती हैं पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज़ से ऑलवेज स्टे ऑन विद मिनट्स जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। सो टॉक ऑल यू वांट एंड लेट गो ऑफ व्हाट लिमिट्स यू विद पोस्ट पे बाय जैज़। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। दुनिया, खबर की दुनिया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बायस बरोज हफ्ता इस्लामाबाद में छुट्टी होगी। जिला इंतजामिया ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्की तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक की नई सहूलत। एक्सचेंज कंपनीज को फॉरवर्ड सेल की इजाज़त दे दी। एक्सचेंज कंपनीज अब बैंकों से योमिया डॉलर का रेट तय करके 5 रोज के अंदर किसी भी वक्त फ्राहम करेंगी। और फैसलाबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 14 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुल्जिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दुनिया, खबर की दुनिया। फील क्या होता है? पूरी बॉडी में सनसनाहट, हाथों में कपकपाहट, पैरों में डगमग, दिल में धक-धक, सर में चक-चक की फीलिंग ही अलग और सांस है झटपट। ये लो 7 दिन का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स।
वीकली प्राइम से मिले 100 GB डेटा, लगातार टेलीनॉ मिनट्स और 600 अदर नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 600 रुपए में, वो भी पूरे 7 दिन के लिए। तो अभी टेलीनॉ पर आओ, ऑफर लगाओ और डेटा की टेंशन को भूल जाओ। अनोखा शहर है ये कराची, 24 घंटे धड़कता है, बेचैन रहता है कल के इंतजार में। फिर भी ठहराव है, एक मजेदार तज़ाद, हर पल मोहतात लेकिन गैरों पे भरोसा, पाई पाई का हिसाब पर है बड़े दिल वाले। कराची शहर नहीं, एक जज्बा है, पूरी दुनिया समेट लेता है, सबको अपनाता है शान से। जब कराची का एक जायका नहीं तो एक बिरयानी काफी कैसे, और बिरयानी तो है ही कराची की शान। जितने अज्जा कराची को कराची बनाते हैं, वैसे ही शान की बिरयानी में है मसालों का परफेक्ट ब्लेंड और जायका। खुद सीधा कुछ उल्टा, जैसा भी है ये शहर हमारा है, तो जियो शान से कराची। कराची में 10 में से 9 लोगों का इंतखाब, शान रेसिपी मिक्सेस। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया की ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। अमेरिकी मीडिया का ये कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट जो है ये ईरान मुज़ाकरात पर है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी सदर on this very issue right now. CNN's Elena Treen is standing by there. The vice president is expected to be departing sometime soon for what are still these planned talks. What are you hearing from there? Yeah, look, I think a lot of people in the administration are, of course, a bit wary of how these talks are going to go. But I've heard, particularly yesterday, after some of the back and forth, of course, there was a lot of concern yesterday morning and Wednesday night about whether or not this fragile ceasefire would actually break down before they had a meeting in person to try and deal with this. But over the last, 12 to 24 hours or so, there's been a little bit more optimism. And I know the president himself is hoping that once they are in person in Pakistan, that hopefully they can broach some of the really large daylight between these two different plans, as Nick laid out, the 10-point plan from Iran, the 15-point plan from the U.S. I am told they're expecting the meeting on Saturday with the Vice President, Steve Witkoff, Jared Kushner, to be the first of likely several intense negotiations over that 2-week ceasefire. And of course, they could ultimately extend the ceasefire further if they believe progress is being made. But one thing I just want to point out about Vance himself quickly is that, one, I've been told that his presence here is really meant to lend a certain air of credence to these talks. He's, of course, the president's number 2, has a lot of the president's full trust to negotiate on his behalf. But also one thing that's been interesting as well from some of my conversations around this is that they recognize Vance as someone that the Pakistanis, the mediators involved in this, but also the Iranians know as someone who is a former anti-interventionist person in foreign wars, that he was one of the few people who did not want the president to move forward with strikes, which could also give perhaps a sense of, giving Vance looking more reasonable perhaps in their eyes. We'll have to see how these negotiations go. But of course, a lot riding on them at a very, very precarious time for this ceasefire. This morning, we've got major new questions leading up to scheduled peace talks in Pakistan between the United States and Iran. Vice President J.D. Vance leading the U.S. delegation. You're looking at live pictures from Joint Base Andrews, where the vice president is scheduled to depart any minute. But there are these questions, big ones, like, is a ceasefire if there is still fighting? There are new strikes in Lebanon overnight. Of course, Israel says Lebanon was never part of the ceasefire deal with Iran. Iran says otherwise. Kuwait also says there were strikes there as well. Another question, is a ceasefire if the key concession from Iran has not been met?
we're talking about the Strait of Hormuz. The president had insisted that Iran opened the strait, that was part of the ceasefire deal, but traffic there remains severely disrupted, barely a trickle, if at all. With us now is Senator Chris Coons, a Democrat from Delaware. He is on the Senate Foreign Relations Committee. Senator, good to see you this morning. What is your best case realistic scenario for these talks scheduled to begin tomorrow? Well, John, thanks for that question. Best case is one thing, realistic is another. From the beginning of this war of choice, this chaotic war, it's been unclear exactly what President Trump's goals are and exactly why the United States has spent more than $50 billion over more than 40 days. Americans are seeing the price at the pump over $4 a gallon everywhere in the country. We're going to see inflation go up. The costs at the grocery store will be impacted. Fertilizer will impact the growing season for farmers around the world. And as you just said, the Strait of Hormuz is not open. And if the goal was regime change, we have Ayatollah 2.0 in place, his son, more angry, more radical, more likely to be aggressive. Yes, we've sunk a lot of their official navy. No, we haven't weakened their ability to shut the Strait of Hormuz. Yes, we've blown up a lot of ballistic missiles. No, we haven't ended their ability to keep launching them every day. Iran clearly still has control of its country. It has control of drones and small fast boats and missiles that continue to strike and threaten American bases, American embassies, and our partners and allies throughout the region. So it is unclear to me what's been accomplished. Of course, I wish J.D. Vance success, and I hope that there will be a negotiation, but maybe it can achieve a real ceasefire first, and then hopefully an accounting for the highly enriched uranium that we still don't have transparency or accountability into, and an end to the closure of the Strait of Hormuz. The United States has stopped striking Iran, inside Iran, Israel as well. Other than that, do you think it can be called a ceasefire, a 2-week ceasefire? It really can't if the core thing that Iran is doing. Islamabad, ahead of expected talks between the U.S. and Pakistan, the Speaker of Iran's parliament has issued conditions for the start of peace talks. Iranian media report that he will lead the delegation. And Vice President J.D. Vance heads up the U.S. delegation. Before leaving for Pakistan, Vance warned the Iranians not to try to play the United States. CNN's Kevin Liptak joins us from the White House. So clearly, Kevin, as our previous guest earlier said, that this is a lot of posturing publicly from both sides. But in reality, how much leverage does the United States come to the table with in terms of bringing this war to an end successfully? And that includes opening the Strait of Hormuz. You know, I think when you talk to administration officials, they do feel like they're going into these talks relatively optimistically, that the Iranians behind the scenes are far more eager to strike a permanent deal than perhaps their public posturing might suggest. But clearly their continued control over the strait is a massive point of leverage. It's something that's causing an enormous amount of concern at the White House. And so as J.D. Vance now flies over there, I think there's a recognition that he will have a very difficult task in front of him. You know, he has not had this kind of diplomatic assignment before. He spent most of this war sitting mostly on the sidelines. And of course, we know that at the beginning of it, he warned the president about becoming engaged in a full-on conflict. That's part of the reason why the Pakistanis thought he would be a better fit to lead the delegation than Steve Witkoff and Jared Kushner, who will also be there, but it will be J.D. Vance who is at the forefront, lending, I think, a degree of credence to the talks, a degree of formality in some ways compared to how Witkoff has operated, which is essentially writing down these proposals, passing papers back and forth. I think Vance is expected to engage in something of a more formal engagement with the Iranians as these talks proceed. You know, I was on that trip with him to Hungary earlier this week, and he did try and downplay in some ways his role in all of this. He says he had just been sitting on the phone with the intermediaries, going back and forth, talking about some of these sticking points. He also downplayed this question of whether Lebanon was involved in the ceasefire, saying it was just a misunderstanding. But that too, I think, is going to be, prove to be a tricky thing for them to discuss. The parliament leader saying today that in addition
to lifting sanctions, that the war in Lebanon would have to end as well. And so a lot of obstacles to overcome before they can come to some sort of permanent agreement. But the world is watching with bated breath ahead of this weekend's crucial talks between the US and Iran. The US Vice President set off in the past couple of hours from Washington, warning Iran against approaching the talks in bad faith. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. Well, Lebanon is a critical component of this ceasefire, with Hezbollah claiming new attacks after heavy Israeli bombardment this week. The Lebanese Prime Minister will visit Washington in the coming days. President Trump has asked Israel to scale back on attacks on Lebanon. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel wants negotiations with the Lebanese government about disarming Hezbollah. CNN's Jeremy Diamond joins us live from Tel Aviv. Do you want to just join the dots on what we are seeing here and talk to us about the significance? Yeah, well, what we are witnessing right now is, on the one hand, this new diplomatic effort between Israel and Lebanon, with the possibility of talks taking place as early as next week, and yet at the same time, continued Israeli strikes in Lebanon, continued Hezbollah strikes in Israel, and no ceasefire to be had between these two sides. And the real question is whether all of that is ultimately going to jeopardize the broader ceasefire agreement between the United States and Iran. Iranian officials have repeatedly indicated that should there not be a true ceasefire in Lebanon, should Israeli attacks there continue, then that could put the whole ceasefire agreement in jeopardy. They have already said that they're not going to fully reopen the Strait of Hormuz until there is a ceasefire agreement between, in terms of Israeli strikes in Lebanon. And indeed, we've only seen, a small handful of ships every day now passing through that Strait of Hormuz since the ceasefire agreement took effect, which is a far cry from what U.S. officials had expected when they reached this agreement. In terms of the Israeli strikes in Lebanon, we've got new data now from UNICEF, which says that those strikes on Wednesday, which killed more than 300 people, of those, about 33, there were at least 33 children who were killed as a result of those strikes, more than 150 who were injured. And we've seen, of course, the effect that those strikes in densely populated parts of the Lebanese capital, the effect that that has had on Lebanon's population, which, parts of it had been kind of increasingly frustrated with Hezbollah, understanding why Israel was striking Hezbollah. But at the same time, when strikes start to kill civilians in densely populated areas of Beirut that are not those Hezbollah strongholds in the southern suburbs, that starts to change the thinking, the public opinion in Lebanon. And that is perhaps why we saw Lebanese officials last night say that they will not conduct negotiations with Israel under fire. We understand from our sources that Israel intends to scale back some of its strikes in Lebanon, but not agree to a ceasefire altogether. We will monitor over the coming days to see whether there really is any scaling back, because for now, we're certainly continuing to see strikes in both directions. Becky? These talks have been suggested now by Lebanon for some time. Is it clear why it is that Benjamin Netanyahu has decided now is the time to announce that he wants to talk? Yeah, sources have told me and my colleague Tal Shalev that it was at the direct request of President Trump, in fact, that President Trump called the Israeli Prime Minister, asked him to, on the one hand, scale back those strikes in Lebanon, and secondly, to enter negotiations with the Lebanese government about disarming Hezbollah and ultimately establishing peaceful relations between Israel and Lebanon. But again, we will see whether those talks actually proceed, given everything else that's happening. Becky? Yeah, absolutely. Jeremy, thank you for that. Nick Robertson then is in Islamabad ahead of what is this weekend's US-Iran talks. Nick,
Just give us a view on the ground, if you will, on the preparations for these talks, who is attending, and the scope of what they will discuss. High security, the centre, the sort of red zone as it's called in and around government buildings, and some key hotels where the delegations will be hosted, is a pretty much closed, lockdown, secure site. Secrecy as well. That's something we've seen writ large through the war. The Gulf states in particular not wanting to sort of rock the boat, talk about what's happening in detail because they don't want it to escalate the situation. And it's the same going into the talks now. The secrecy, because neither side here appears to want to scupper the potential of what could happen here. Pakistan says it's honored to have this huge diplomatic lift and opportunity to try to bring the sides together and rebuild trust. I think what we're expecting when the sides are all here on Saturday, and we understand obviously J.D. Vance now on his way already, saying that the US side is willing to work, extend a hand to Iran, as long as essentially Iran doesn't mess the United States around. But I think the model of how these talks will unfold, very likely what's called in diplomatic terms proximity talks, where the two sides are not at the same table, separate rooms, where Pakistan's diplomats, security chiefs, intelligence chiefs, military chiefs, all those who've been so keenly involved in getting this to where it is so far, will be able to move between the delegations and try to put things forward. Precisely who's coming from the Iranian side, the Speaker of the Parliament, Ghalibaf, is expected but not confirmed. We've heard from the Iranian president, from the foreign minister, from the Speaker of the Parliament as well, saying that the issue of the ceasefire, Hezbollah's ceasefire, or Israel's ceasefire against Hezbollah in Lebanon is absolutely critical to these talks moving forward. But J.D. Vance had described perhaps a level of misunderstanding. So it's still all to play for, but how it shakes down, that is such a closely guarded secret. But Iran saying it's coming into these talks with its 10-point plan taking primacy. The interlocutors here, Pakistan, not saying anything about that. Secrecy, again, is the key watchword, I believe, here to try to make progress. How much progress? Holding the ceasefire at the moment would seem to be a level of progress right there, Becky. Thank you, Nick. Nick's in Islamabad. We started the show with J.D. Vance's latest comments. We know that he will be a critical member of this US negotiating team. As Nick reported, we are working to understand who else will be in Islamabad this weekend. And for more inside reporting from our White House team about the Vice President's weeks-long role behind the scenes in diplomacy and how it plays into, for example, his potential bid to be Trump's sort of MAGA heir. That is at CNN.com on our digital platforms, and that is well worth a read. Well, an attack has damaged a key oil pipeline which allows Saudi oil exports to bypass the Strait of Hormuz. This satellite image taken Wednesday. Remember, this ceasefire was supposed to come into play Tuesday night. This is now Wednesday, this image showing black smoke pouring from a fire at a major oil facility at the eastern end of the pipeline. The state-run Saudi press agency says one person was killed in the strike and says attacks on energy infrastructure have reduced Saudi exports by more than a million barrels a day. Well, CNN's chief international correspondent Clarissa Ward is live in Riyadh with more. And Clarissa, what more do we understand about the attack and the greater disruption to Saudi oil supply, which only, of course, underscores the stakes of tomorrow's talks? Yeah, I think the numbers are quite startling, Becky. Two separate incidents that were revealed. One, which you already mentioned, the attack on that east-west pipeline, resulting in the loss of 700,000 barrels of oil a day. Another incident resulting in the loss of 600,000 barrels of oil a day. These are large numbers, and we have seen in real time over the course of the last 5 weeks the impact that
that this has had on oil markets, on global reserves. And so, understandably, not just the leadership here in Saudi Arabia, but in Gulf countries across this region, the Strait of Hormuz and Iran's de facto kind of ownership or decision making and who gets to cross and who doesn't and who pays what is an absolute red line. And there is very real concern here that it is essential that during these face-to-face talks in Islamabad that there will be security guarantees baked in to any agreement that will ensure that Iran does not maintain this control over the strait. We also heard from UK Prime Minister Keir Starmer saying that he had spoken to President Trump yesterday and talking a little bit about his efforts during the course of that conversation to put together a coalition to ensure that the Strait of Hormuz remains open. Take a listen. We spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait. We've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the Strait. This is not going to be easy, Becky. I mean, we have seen that Iran understands very well that the Strait of Hormuz is the most powerful bargaining chip it has at the moment. Just last night, the new supreme leader put out a statement effectively saying that Iran had been the victor in this war and saying that the Strait of Hormuz will now be entering a new phase, Becky. And the UAE has described what Iran is doing in that strait very specifically. They've called it economic terrorism. The UAE advisor to the president, Anwar Gargash, posting this as well today, that the Abu Dhabi will reassess its relationships after bearing the brunt of Iranian attacks. Quote, "We'll scrutinize the map of our regional and international relations with precision, and we will determine who can be relied upon, including the structuring of an economy and financial system, or economic and financial system that bolsters the resilience of our model." There is a sort of sense around this region that its regional security must be embedded into any deal going forward. But the positions are quite nuanced. The UAE doubling down on its relationship with the US, saying that is absolutely tight. We've seen a real push for diplomacy, for example, by Qatar and Oman. To a degree, the Saudis, who have been part and parcel of organising these talks. What are you hearing in Riyadh about the sort of Gulf perspective here? I think that, Becky, Saudi Arabia has definitely taken a less confrontational approach than the UAE. The word you hear a lot is restraint. And I think that it was very telling that just a couple of days ago, Saudi Arabia's foreign minister and Iran's foreign minister had their first phone call since the war began. Obviously, there is an acknowledgement here that there has been a complete erosion of any trust between the two nations.